Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography. We are on part number 2, and today is its 11th lecture. We are going to discuss about the northwestern mountain ranges. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. क्योंकि हम पाकिस्तान के एक मखसूस फिजिकल रीजन को, which are the mountain ranges, उनको डिस्कस कर रहे हैं. उनमें से एक तरह की माउंटेन रेंजेस जो एक मखसूस एरिया में लोकेटेड है, हमने उनको जो है वो स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में. सो क्विकली टेल मी व्हिच माउंटेन रेंजेस आर इंक्लूडेड इन नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस. The Himalayas and the Karakoram. Very good. So my dear students, let's begin with an activity. So quickly tell me, show the map of Pakistan. अब मैं आपको एक map of Pakistan दिखाऊंगी, and I hope कि अगर teachers भी बच्चों को पाकिस्तान का map जो है physically दिखाएं तो बहुत अच्छा होगा. And show the mountain ranges in Pakistan. Focus on the mountain ranges other than Himalayas and Karakoram. Tell them these are Hindu Kush, Suleiman mountain ranges and are called northern mountain ranges. So my dear students, अब पाकिस्तान की हमने दो तरह की कैटेगरीज में पाकिस्तान की फिजिकल रीजन को, माउंटेन रीजन्स को जो है वो डिवाइड किया. वन आर कॉल्ड द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, जिसमें क्या आ गया था, कराकोरम एंड हिमालयाज. द अदर आर कॉल्ड द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, और इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पीक्स आती है. वन इज कॉल्ड द हिंदू कुश विच इज हेयर नियर खैबर पख्तूनख्वा, और ये अफगानिस्तान के साथ भी टच होती है. एंड द नेक्स्ट इज द सुलेमान माउंटेन रेंज विच इज इन बलोचिस्तान एंड it touches ये अफगानिस्तान के बॉर्डर को भी टच करती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द अदर माउंटेन रेंजेस व्हिच आर कॉल्ड द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस. सो आज हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे. कुछ और भी माउंटेन रेंजेस हैं जो कि इसी के साथ आती हैं, इसी कड़ी का हिस्सा हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू briefly describe the distinctive characteristic features of each physical region of Pakistan. और आज हम कौन सा फिजिकल रीजन पढ़ रहे हैं, माउंटेन रीजन्स, और उसका भी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, क्विकली रीकैप इट. वेरी गुड, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. सो अल्लाह सेज इन कुरान, and we placed firm mountains on earth lest it should sway with them, and we made wide paths in them that they may find their way. So my dear students, now let's quickly move forward towards the refreshing your knowledge, ताकि आप थोड़ा सा एक दफ़ा आपके जहन में आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं before we move on towards today's lecture. So what is the classification of mountain ranges in Pakistan? So ये जो physical region है जिसको हमने mountain की तरह से कैटेगराइज किया है, इसके कितने तरह के जो है इनको हमने लोकेशंस में डिवाइड किया. नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस एंड नॉर्थ वेस्टर्न. नॉर्दर्न को हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस. फॉर दैट क्विकली ओपन पेज नंबर 78 in your books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's quickly look at the map of Pakistan. अगर आप पाकिस्तान के मैप को गौर से देखें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पॉइंट आउट करें, so these are the Karakorams and these are the Himalayas, which are the northern mountain ranges of the Pakistan, क्योंकि ये पाकिस्तान के नॉर्थ में आ गई. अब ये एग्जैक्ट नॉर्थ है पाकिस्तान का, and when we move slightly towards the west, ठीक है, नॉर्थ में ही in the north towards the western side comes an other mountain range जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस. अब इसमें कौन कौन सी आ गई, इसमें हिंदू कश है, कोहे सफेद है, इसके अलावा सुलेमान माउंटेन रेंज है और किरतार माउंटेन रेंज है. सो दीज ऑल कम इन द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, और ये इनकी तमाम की जो हाइट है फ्रॉम द सी लेवल, इट इज रिटन हियर. So now let's quickly move forward towards the reading. The northwestern mountain ranges, put your fingers where I will read. The northwestern ranges of our country are also known as western branches of Himalaya mountains. These mountains consist of a series of parallel ranges and are lower in altitude than the northeastern mountains. These mountains act as a boundary between Afghanistan, Iran and our country. The series of mountains includes Hindu Kush, Kohe Safed, Kohat and Waziristan Hills, Suleiman Ranges and Kirtar Range, etc. So my dear students, अब ये जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमारी माउंटेन रेंजेस आ रही हैं, इसको हिमालय की ही एक कड़ी कहा जा रहा है, लेकिन ये एल्टीट्यूड में यानी कि हाइट में सी लेवल से
या अगर आप कंपेयर करें कराकोरम और हिमालय से तो ये काफी एल्टीट्यूड में कम है। और इसकी कड़ी कौन कौन सी है? सुलेमान है, कोहे सफेद है, वजीरिस्तान हिल्स है, किरतार रेंज है। ये तमाम जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज का हिस्सा है और ये किस तरफ किस बॉर्डर पे बनी हुई है? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं ये उसके ऊपर लाए करती हैं। सो अगर मैं दोबारा अगर आपको मैप दिखाऊं तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान एंड हियर इज ईरान। सो ये इस बॉर्डर के ऊपर जो है ये तमाम माउंटेन रेंजेस जो है वो मौजूद है और ये इसी तरह से हिमालय की एक कड़ी है जो कि लो इन एल्टीट्यूड है। एज यू कैन सी ये बहुत हाइट पर है, यहाँ पे हिंदू कुश पे भी थोड़ी सी हाइट पे, बट कराकोरम एंड हिमालयाज आर एट अ वेरी हाइट। So quickly tell me, name the mountain ranges included in northwestern mountain ranges. कोहे सफेद, हिंदू कुश, सुलेमान, किरतार माउंटेन रेंजेस, इसके अलावा वजीरिस्तान हिल्स, these all are included in northwestern mountain ranges. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print from bio teacher, write down your name and your class and then start working on it. Which mountains are also known as western branches of Himalaya mountains and why? So the northwestern mountains ranges are also known as the western branches of Himalayas because they lie in the west of the Pakistan and they are low in altitude. That is why these are known as northwestern branches. List the names of western mountain ranges. So आपने इन तमाम के names लिखने हैं. Then locate, label and color the northwestern mountain ranges. So Hindu Kush, Suleiman mountain range, Kirtar mountain range, Waziristan hills. So these all are located in this area of the Pakistan, which is the northwestern part. So for homework you will write a note on north and northwestern mountain ranges. ठीक है, एक brief सा note आपको लिखना है for half a page, one paragraph about northern and northwestern mountain ranges. Also include the names of the important ranges which are in both the mountain ranges. So today we have discussed about the northwestern mountain ranges which are also known as the western branch of Himalayas. They are low in altitude. They include Kohe Safed, Hindu Kush, Suleiman mountain ranges, Ketar mountain ranges. So my dear students, in the next lecture we will discuss about the plateaus. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.